ओके तो ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर है। रीडिंग 1, गिव एट लीस्ट 2 इंट्रेंस दैट प्रूव that Jane Goddard was very disciplined in her research. ओके तो लुक एट हियर्स, यहाँ पे हम देखते हैं आंसर ये रहा। वो अपने काम में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रखती थी। सो लुक एट हियर्स, आंसर में है द 2 instances are she never went back to her camp before a sunset. Second, sometimes she would sleep at the peak at the pack change the night. Second question है why did Jane observe the chimpanzees from for the entirely? So answer is Jane Goddard spent more than 55 years observing wild chimpanzees in the Gom Stream National Park in the Tanzania. Okay. Question 3 है how were the chimpanzees different for the baboons और chimpanzees में क्या डिफरेंस था? तो आंसर है लार्जेस्ट ग्राउंड ड्वेलिंग मंकीज विथ अ लॉन्ग डॉग लाइक स्नोआउट एंड लार्जेस्ट टीथ. ओके एंड क्वेश्चन 4 है What did Jan learnt about chimpanzees feed habits? Chimpanzees feed habit is leaves, flowers and fruits. वो chimpanzees जो होते थे वो flowers, leaves and fruits खाते थे and kind of leaves, blooms, seeds and steam insect kill and kill prey animals and feed on meat also. Question 5 है Jan hints several times at the fact that Gom was a dangerous palace, states at the instance and say why it could have been dangerous. क्यों dangerous था? तो हम यहाँ पे देखेंगे, उसका रीजन यहाँ पे दिया गया है because Gombe were particularly dangerous, mainly buffaloes and leopards and of course home or politicians Stevens different kind of so वहाँ पे जहरीले सांप थे, बफेलोज थे एंड लियोपार्ड्स थे, उसकी वजह से वो डेंजरस था. नेक्स्ट क्वेश्चन है why do you think Jen say that the pig began to feel like a home? So क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे है the pig began to feel like a home. I carried a little teen thing up a 3 and 7. How did Jen's mothers help Jen? Jen's mothers set up a clinic to help the locals requirement that Jenny and her mothers only wanted to help this helped Jen to create her research. उसकी मम्मी ने हेल्प की उसको वहाँ पे क्लिनिक के लिए. क्वेश्चन 8 है लिस्ट एट लीस्ट 5 न्यू डिटेल्स यू हैव लर्नड अबाउट चिंपांजीज फ्रॉम ऑटोबायोग्राफिक अकाउंट. क्या है इस ऑटोबायोग्राफिक अकाउंट में? सो आंसर इज हियर्स आई कॉल्ड see a chimpanzee moving in the trees and I could hear if they call it chimpanzees would run away slightly. Gradually I began to learn about the chimpanzee home and how they lived. ओके चिंपांजीज के बारे में यहाँ पे रिसर्च किया गया है एंड जो नेशनल पार्क है उसके बारे में. नेक्स्ट है वोकेबलरी. वोकेबलरी में आएगा, हम यहाँ पे मैच करते हैं ब्रिटिश एंड given below is a list of some common British and American words which have the same meaning. Can you match the words that mean the same? ओके ब्रिटिश में है और अमेरिकन है. बिस्कुट, लॉरी, पेवमेंट, फुटबॉल, शॉप, साइडवॉक, कुकी, स्टोर, ट्रक, कुकर. ओके सो ये रहा आंसर यहाँ पे. ओके ठीक है, बिस्कुट का आएगा कुकी एंड. हम बात करते हैं रीडिंग 2 में. क्वेश्चन 9 व्हाई डू यू थिंक द ऑथर से जुलाई 1960 सॉरी रीडिंग 2 में देखते हैं व्हाई डू यू थिंक द ऑथर से जुलाई 16 1960 वॉज द डे आई शैल रिमेंबर ऑल माई लाइफ. ओके सो आंसर इज हियर्स.
The author says so because it was the day the sea entered Gombe National Park and started her research and chimpanzee है. नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा यहाँ से. पिकअप अदर्स क्लूज दैट टेल्स दैट जैन गॉडल्स वॉज न्यू टू हर जॉब एज अ प्रीमियोलॉजिस्ट. मतलब कि जो खोज करते हैं उसको कहते हैं प्रीमियोलॉजिस्ट. सी वॉज नॉट वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर हर लॉन्ग स्टे एंड हर सीरियस वर्क ईयर्स. ये रहा आंसर 10 का. सी स्पेंड द नेक्स्ट फ्यू decided at the park observing the chimpanzees. She reacted to the safety on the both occurrences. Okay. Question 11 है. What are the qualities in Jen's characters and inspire you? State them and give reason for your answer. Where okay, so answer is here. Many things about Jen's characters inspired me. I think she was a very brave because she was just 26 years old when she come to the Gombe National Park to study chimpanzees. She was also very patent and dedicated to her research because she took a year to come within 100 yards of chimpanzees and spent long days at the peak. बहुत ज़्यादा ब्रेव और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बताया गया है. 26 ईयर्स में वो ये गैम्बे नेशनल पार्क का ऑब्जर्वेशंस करती है. सो ओके, ग्रामर आर्टिकल्स की रीडिंग्स करते हैं हम यहाँ पे. एन एंड द आर कॉल इट आर्टिकल्स. आर्टिकल्स किसे कहते हैं? इट्स कॉमन, क्योंकि हम लोग बचपन से ही ये पढ़ते आ रहे हैं ग्रामर्स में, इंग्लिश में फर्स्ट ही ये आ जाता है. तो ये रहे आर्टिकल्स. सो हम यहाँ पे बात करते हैं. ए और ऑन बोथ मीन एंड वन एंड सो दे आर यूज्ड विथ सिंगुलर नाउन्स ओनली. एग्जाम्पल्स: आई कैरिड अ टीन ट्रंक अप देयर. इन इट आई कीप्ड अ केटल एंड अ teen mug. Once my mother carried on old man. We use before singular nouns and or adjective which begin with a consonant sound, and we use before a singular noun or adjective which begin with a vowel sound. Examples: a brunch, an oppositions, chimpanzees, and autobiographies. We use or when we mention a noun for the first time. We use the when we mentions the noun a second time. Examples, example के थ्रू बताया गया है. A boy meet a dog on his way to school. The dog and the boy become good friends. Okay. We use the when. The listeners, readers know which person, place or thing we are talking about. Example: bringing me the book. The listener knows which book. We use the when there is only one research things. Example: the moon, the sun, and the sky. We use the before a few proper noun like names of oceans, rivers, island, and famous monuments. Example: the Pacific Ocean, the Great Wall of China, the Caribbean Island. We use the before superlative forms of adjective. Example: he is believed to be visit man in ancient Turkey. We use the before ordinal numbers that show position of some things is in a list. First, second, 15th, next and last others. Example: it is believed that the Nasruddin Hoxha lived and died during the 13th century in a Seljuk Sultanate of Rum in modern Turkey. He was the first man whose stories reached almost all continents of the world. Okay. सर्कल द राइट आर्टिकल्स टू कंप्लीट द स्टोरी. ये पूरी स्टोरी में आपको जो राइट आर्टिकल्स हैं उस पर सर्कल करना है. वंस नसरुद्दीन होडिजा वॉज इन्वाइटेड टू डिलीवर द स्पेस स्पीच
ए आएगा. He climbed to the pulpit and asked, "Do you know what I am going to speak about?" A and the audience said, "No. Why should I speak to you when you don't even know what I am going to speak about?" said Hodija and walked off. A and the people were eager to listen to the such a and the wise man, so they brought him again. A and peoples were eagers to listen to the such a and the wise man, so they brought him again. And the next day Hodija asked then the same the आएगा same question, and this time smart people said, why should I was it waste your time when you know what I am going to speak about, said Hodijas and left. On third year, on a third year, crowd gathered again to listen to Hodija. Hodija repeated the same question. This time to the peoples were smarter. Half of them said yes, and the others half said and the others half said no. Hodija said, let's thus who no, let's those who doesn't know, and left. Okay, तो spelling Ibel or Abel. Many adjective and in Ibel or Abel both mean capable of being. For example, enjoyable means can enjoy, terrible means can terrify. तो यहाँ पे हमने देखा इंजॉयबल, इंजॉय का इंजॉयबल आ गया और टेरिबल का टेरिफाई आ गया. सिंस बोथ इबेल एंड अबेल साउंड सिमिलर, दोनों एक बोलने में एक जैसे लगते हैं, बट दोनों के बीच में डिफरेंट है. इट इज समटाइम डिफिकल्ट टू स्पेल वर्ड्स देयर एंडिंग. हियर इज सिंपल यूज टू रूल टू हेल्प यू. यूज अबेल व्हेन द root words look like wool. English words example renew, renewables, adapt, adaptables. ओके, ये एग्जाम्पल दिए गए हैं यहाँ पे. यूज इबेल व्हेन द रूट वर्ड डज नॉट लाइक लुक लाइक वूल. इंग्लिश वर्ड एग्जाम्पल विच विजेबल सेंस सिंसेबल्स. देयर आर अ फ्यू एक्सटेंशंस टू द रूल. For example, suggestible, digestible, accessible, subject, digest, access and meaningful English root words यहाँ पे दिए गए हैं. इबेल एंड अबेल. रीडेबल्स, एक्सेप्ट तो एक्सटेबल्स एंड इंडेबल्स. ऐसे इस तरीके से इसमें जो भी वर्ड्स सुटेबल्स हैं वो यूज करने हैं यहाँ पे ये वर्ड्स के साथ. ओके, यहाँ पे राइटिंग दी गई है. डिस्क्राइब ऑब्जेक्ट यूजिंग 5 सेंस. ओके, हमें यहाँ पे जो ये 5 सेंस है हमारे, उसके बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है. व्हेन वी डिस्क्राइब समथिंग it is useful to us many of the 5 sense as we can. हमारे पास 5 सेंस होते हैं, ये तो हमें पता ही है कि that way it is easier for the audience to imagine what we are describing. Here is an example. As you read, underline all the words connected to the sense monetizations. Sight. Okay, the chocolate sat on the white plate. Okay, it purple covers was open. The golden wrapper glimmered in the morning light. The dark brown chocolate coated with the creamy nuts and looked so attractive. चॉकलेट जो होती है उसे गोल्डन रैप किया जाता है कागज से, एंड जब हम ओपन करते हैं उसका कोटेड जो होता है बहुत ज़्यादा मतलब चॉकलेटी डार्क ब्राउन एंड उस तरीके से होता है. क्रीमी नट्स होते हैं उसके अंदर. सो बहुत ज़्यादा डिलीशियस होती है एंड अट्रैक्टिव होती है, देख के ही मुंह में पानी आने लग जाता है. Hearing, I picked up the chocolates and tore off the purple cover. The golden wrappers peeled off the easily making a crickling sound. जब हम खोलते हैं तो उसमें से crickling sound आता है. And I broke a pieces of chocolate. Crack, तोड़ते हैं तो crack करते हैं तो I couldn't wait to bite into the delight. So delighted होती है touch.
एंड टच आई फेल्ट इट्स अ सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स, उसका बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है. इट वॉज स्मूथ एंड द नट्स वेर सो नीटली प्रेसेड इन द आई रन माई फिंगर्स. हम अपनी फिंगर से उसे मतलब स्मूथली एकदम स्लाइटली बम्पिंग हीड एंड हैज एंड नट्स स्वेलिंग. जब चबाते हैं नट्स बीच में आते हैं तो वाओ, सो अमेजिंग टेस्ट. And over the brown surface, as I pressed down a little, the hat from my hand made the chocolate melt a little. I felt the warm mushy paste between my thumb and forefingers. Okay. नेक्स्ट है हमारा स्मेल. बहुत ही मतलब ऐसी स्मेल आती है जिससे हम लोग मतलब हमारा एकदम मूड ही सही हो जाता है. आई लिफ्टेड टू इट टू माई माउथ. द चॉकलेटी स्वीट वार्म स्मॉल स्मेल रोज टू माई नॉस्ट्रिल्स. आई वॉन्टेड मोर टेस्ट. I licked my finger. Wow, the creamy, sweet, delicious taste spread over my tongue. I took tiny bites as I crushed the nuts gently between my teeth, and crunchy munch felt like nothing else on earth. डिस्कसिंग लाइक एंड डिसलाइक्स, जो हमारे पसंद है और नापसंद है उसके बारे में बात करते हैं. इन द रीडिंग सेक्शंस वी रीड द चिंपांजीज लाइक टू eat seeds, blooms, stems, and insect. We also learnt that they like to sleep comfortably. What you do like, what you not like at work. In Paris, discuss with the least 3 of your classmates how they like doing the activities listed in the table given below. On the basis of their answer, where tick the appropriate columns in the tables. Your conversations may sound like this. Do you like watching television on holidays? Your partner, no, don't like it much. I love playing outdoor games. So in this case, this not a match or watching televisions. Look at here. अब यहाँ पे हमने देखा है एक्टिविटी ड्यूरिंग हॉलीडेज, विजिटिंग रिलेटिव्स. हमारी जो हॉलीडेज की एक्टिविटीज़ है उसका चार्ट बनाया हुआ है यहाँ पे. वेरी मच, क्वाइट, नॉट मच एंड यहाँ पे क्या लिखा है, नॉट एट ऑल. ओके, तो हमें यहाँ पे अपना व्यूज़ देने हैं कि क्या है हमारा ओपिनियन, लाइक इट, डिसलाइक इट. ओके. विजिटिंग रिलेटिव्स, हमें रिलेटिव से मिलने जाना है. वेरी मच, यस, नो या जो भी हो हमारा ओपिनियन वो लिखना है. गोइंग टू न्यू पैलेस और साइट साइनिंग. रीडिंग बुक्स, ट्रैकिंग, माउंटेनिंग एंड साइकिलिंग. वॉचिंग टेलीविजन, प्लेइंग आउटडोर्स एंड इंडोर्स गेम्स. ये ज़्यादातर मोस्ट ऑफ इसमें सब में यस ही आएंगे. ये थोड़ा सा है कि नहीं, नो आ सकता है. ओके. Life skills, social or interpersonal skills. Empathy is the ability to understand someone else's situations, feelings, and preparations for their points to view, and to be able to communicate that understanding back to the other person. Empathy is the vital leadership skills. One palace to the learn that the feeling the abilities and doing random acts of kindness.